वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग फिर से करेंगे एक और सेट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ताकि आप क्रैक कर सके आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन को। तो चलिए, आज हम करेंगे गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के बारे में एमसीक्यूज को करेंगे। तो आते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू पे। When government spends more than it collects by way of revenue, it incurs. क्या हो रहा है? गवर्नमेंट स्पेंड इज मोर देन इट कलेक्ट्स द रेवेन्यू, मतलब खर्चा ज्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, सो दैट लीड्स टू बजट डेफिसिट। सो आंसर वुड बी बजट डेफिसिट। The amount collected by the government as taxes and duties is known as, जो टैक्स और ड्यूटीज के थ्रू जो अमाउंट कलेक्ट होता है, दैट इज नोन एज टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। उन्हें टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। बोरोइंग्स इन द गवर्नमेंट बजट इज, बोरोइंग्स का दूसरा नाम क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय बजट? कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट कोशिश करती है अपने बजट के थ्रू ऑब्टेन करने के लिए? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ, विच इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बजट? बजट का कौन सा कॉम्पोनेंट है इसमें? बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। So that is C, both A and B, that is receipts and expenditure of the budget are the components of the government budget. The expenditure which do not create assets for the government is, ऐसे कौन से expenditures हैं जो government के लिए assets create नहीं करते? That is revenue expenditure. So answer would be A here. Oh, yeah. कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल बजट के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स आते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तो देखते हैं, ऑप्शन में है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो आंसर इज दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज? इनमें से डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए किस टाइप का बजट अच्छा होता है? ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज क्या होती है? जहां पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जहां पे आपको मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करना पड़ सकता है, और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होता है यहाँ पे। तो जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है, मतलब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन पे गवर्नमेंट यूजुअली डेफिसिट फेस करती है। तो डेफिसिट बजट is always favorable for a developing economy. Which of the following statements are true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है? तो सो रीड करके ही पता चलेगा। तो चलिए करते हैं रीड। आंसर्स चैट बॉक्स में आप लोग लिख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट्स। फिस्कल डेफिसिट, total expenditure minus total receipts? No, it's total expenditure minus total receipts other than borrowing. इसमें लिखना पड़ता है other than borrowing is very important. Okay. So primary deficit is the difference between total receipts and interest payment. Primary deficit, total receipts? No, that is fiscal deficit minus interest payment होता है। Fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment. Yes. So answer would be C here. 10th question. Who issues 1 rupee note in India? 1 rupee note कौन इशू करता है हमारी कंट्री में? आरबीआई? No. 1 rupee note and all coins. एंड ऑल कॉइन्स, ये कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इशू करती है। आरबीआई इशूज फ्रॉम 2 rupees to 2000 notes. Okay. Find fiscal deficit if borrowing is 10 rupees 10,000 and interest payment is rupees 2,000. Now we know in our previous question we have already seen that fiscal deficit are called the borrowings of the government. Now borrowings is given rupees 10,000. So answer will be 10,000. Answer 10,000 होगा। आंसर इसे मार्क कर दें क्या? नो। एक यहाँ पे भी आपको 10 दिख रहा है, एक यहाँ पे भी 10 दिख रहा है। क्या चीज का ध्यान देना है? यूनिट का। रुपीज 10,000 है, 10,000 नहीं है। सो आंसर विल बी ए हियर।
फाइंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। व्हाट इज योर फिस्कल डेफिसिट? 8,000. Interest payment is 2,000. Yeah. So answer will be 6,000 rupees. So that's your primary deficit. 13. Revenue deficit is, revenue deficit क्या होता है? अगर हम ऑप्शंस को नहीं देखते, अभी हमें मालूम है डेफिसिट कब होगा? when revenue expenditures are more than revenue receipts. ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं, पहला ही दिख गया हमें, revenue expenditures more than revenue receipts. So answer would be A. तो आ गए अब हमारे 14th क्वेश्चन पर। देखते हैं इस क्वेश्चन को। Find the revenue deficit. Revenue expenditure is 10,000. So you are provided with a revenue expenditure which is 10,000. Tax receipts 5,000. No, fines 2,000. And interest received is 10% of the revenue expenditure. So what is our revenue expenditure? That is 10,000, 10%. It means 1,000 is the interest received. Please take care of this thing. It is interest received, not interest payment. Okay, so it is interest received by the government. So this is also revenue receipt. So sum of all these are the revenue receipts. The sum will be 5, 6, 7, 8,000. So 8,000 is revenue receipts and revenue expenditures are 10,000. So revenue deficit is equals to revenue expenditure minus revenue receipts. That is 10,000 minus 8,000 will give you 2,000. So this is our revenue deficit. Okay. With that, we come to the 15th question. Now, last question. Dash includes budget expenditure and budget receipts. तो क्या इंक्लूड होता है? ये गवर्नमेंट बजट के अंदर आता है. सो गवर्नमेंट बजट इंक्लूड्स both government receipts and the government expenditures. With that, thank you so much, and we will see you in the next video.